Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Light of Nurse. Let's start. आज हम साइकेट्रिक से स्टार्ट करेंगे MCQ सॉल्व करना. आर यू रेडी गाइस? क्या आप सब रेडी हो? हाय. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A patient with schizophrenia say the government has implanted a chip in my brain to monitor me. This is an example of thought broadcasting, somatic delusion या delusion of control या nihilistic delusion. What is the right answer? Answer me guys, please. Option number C हरी, फीलिंग्स ऑल इंडिया. ऑप्शन नंबर बी. चलो मैं बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर. बी इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. The earliest symptoms usually seen in delirium is hallucination, memory impairment, disturbance, sleep, wake cycle, disorientation. Yes, option number C is a right answer. वेरी गुड गाइस, आप लोग ट्राई एटलीस्ट कर रहे हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse finds that a patient with depression suddenly becomes cheerful and start giving away his belongings. The nurse should appreciate his recovery, inform the psychiatrist immediately, allow him privacy, document and monitor later. क्या कहना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में? व्हाट इज़ राइट आंसर? यस, फीलिंग्स ऑल इंडिया. ऑप्शन नंबर बी. Yes, option number B is a right answer. B is a right answer. Next question देख लेते हैं. A patient keep repeating the last words spoken by the nurse. This is echolia, neologism, preservation या verbigeration. एक जो पेशेंट है वो नर्स जो बोलती है वो लास्ट वर्ड है वो रिपीट करता है, तो क्या कहेंगे हम उसे? A. Yes, option number A is a right answer.
ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, अनडूइंग या सबलिमेशन? व्हाट इज राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लाइंट बिलीव्स हिज बॉडी इज रूटिंग फ्रॉम इनसाइड थ्रू देयर इज नो मेडिकल एविडेंस। दिस इज hypochondriasis, somatic delusion, nihilistic delusion या somatization disorder? What is right answer? Absolutely, option number C is the right answer. Very good बेटा, option number C is the right answer. आप सभी लोग भी आंसर करो और कहाँ से लाइव देख रहे हो ज़रूर बताओ, और आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ECT इन सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी इज इम्प्रूव एपेटाइट, रैपिड सिम्टम रिलीफ, करेक्ट केमिकल इम्बैलेंस या लॉन्ग टर्म रेमिशन? व्हाट इज राइट आंसर? सेड हाई एटलीस्ट यार। Of course, option number B is the right answer. Very good beta. Option number B is the right answer. Next question. A nurse restrain a violent patient without physician order in an emergency. This action is illegal, violence of autonomy, justified under emergency care, negligence. What is right answer? C. Yes, option number C. Sorry guys, option number C is the right answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ड्रग रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम सोडियम लेवल ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रेमिया? लिथियम, कार्बेमेज़ापाइन, फ्लॉक्सेटीन, हेलोपेरिडोल? What is right answer? Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question देख लेते हैं। In behavior therapy for phobia, the technique of gradual exposure to feared stimuli is called aversion therapy, systemic desensitization, flooding या modeling? What is right answer? Yes, option number B is the right answer. Option number B is the right answer. Next question. Flight of ideas is most commonly associated with depression, schizophrenia, mania या dementia? क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर बताओ। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स सस्पेक्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम in a patient on haloperidol. The most important sign is restlessness, severe muscle rigidity with high fever, bradykinesia या hypotension? Tell me. Option number B is the right answer. B is the right answer. Next question.
A depressed patient say, I am a failure, I am good for nothing. The most appropriate nursing response is, don't say that you are a good person. Tell me more about why you feel this way. You should not think so negatively. You are only imagining this. What is the right answer? 13 का सी नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर. बी इज ए राइट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, डेल्यूशन, एवाइलेशन या थॉट इंसर्शन? 14 का सी. यस, 14 का सी इज ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज हाइपरटेंशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, वेट गेन या ट्रेमर्स? व्हाट इज राइट आंसर? Option number B is a right answer. B is a right answer, sexual dysfunction. Next, Wernicke's encephalopathy in chronic alcoholism occurs due to deficiency of vitamin B12, thiamine, niacin या B6? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. यस, थायमिन इज अ राइट आंसर. थायमिन इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. ए पेशेंट विथ पैनिक डिसऑर्डर सडनली complain of chest pain and palpitation. The priority nursing intervention is give reassurance and stay with patient, administer antipsychotic medication, teach relaxation technique immediately, leave the patient alone to calm down. फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो. ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर इज ऑन लिथियम थेरेपी. विच सीरम लिथियम लेवल इंडिकेट टॉक्सिसिटी? 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर? What is the right answer? Yes, option number C is the right answer. C is the right answer. Next question. In Freud theory, the part of personality operating on pleasure principle is, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर. ओके, A is a right answer. Next question. The priority goal for a patient with suicidal ideation is encourage expression of feeling, maintain a safe environment, involve family in care, improve social interaction. Last question psychiatric का. ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर. बी इज अ राइट आंसर. ये सारे आंसर्स की दिए हुए हैं, आप बाद में जब सॉल्व करो तो देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसएन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ए पेशेंट विथ COPD इज एन ऑक्सीजन therapy. Which flow rate could the nurse avoid to prevent CO2 retention? मस्त क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो. एमएसएन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं.
C. C is the right answer. C is the right answer. Next question. In a patient with myocardial infarction, which enzyme is most specific for cardiac muscles damage? CKMB, LDH, troponin, first AST. What is the right answer? Absolutely right. Option number C is the right answer. Next question. A patient with burn develop curling ulcer. This complication is due to electrolyte imbalance, stress-induced gastric mucosal ischemia, sepsis या hypoproteinemia. What is the right answer? Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question देख लेते हैं. In acute kidney injury, the oliguric phase is characterized by hypokalemia, hypertension, polyuria या hypovolemia. What is the right answer? Yes, option number B is the right answer. Very good. Option number B is the right answer. Next question देख लेते हैं. Question number 5th. A patient after thyroidectomy suddenly develop stridor and respiratory distress. The first nursing action is call the doctor, administer oxygen, prepare for tracheostomy या check IV line. क्या करेंगे हम? Option number C is the right answer. What C is the right answer? Okay. Next question. Which the earliest of hypovolemic shock? Hypotension, tachycardia, oliguria या restlessness? कौन सा साइन है? Of course, restlessness. Very good feelings all India. Restlessness is the right answer. Next question. The most reliable method to confirm endotracheal tube placement is chest auscultation, condensations in tube, capnography या chest rise. कौन सा टेस्ट हम करते हैं कि पता करने के लिए कि लाइक टेस्ट नहीं, कौन सा कन्फर्मेटरी वो है कि हमें पता चले कि ईटी ट्यूब प्लेसमेंट सही हुई है? Yes, option number C is the right answer. Next question. A patient with cirrhosis develop confusion, tremors and altered cynosurium. The likely cause is hypoglycemia, hepatic encephalopathy, hyponatremia या GI bleed. What is the right answer? Option number B is the right answer. Next question. A nurse noticed trousers sign in a post-operative thyroidectomy patient. This indicate hypokalemia, hypocalcemia, hypermagnesemia या hyponatremia. Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question. The primary nursing intervention in a patient with chest tube drainage system accidentally disconnected is clamp the tube immediately, connect to new drainage system, put the end of tube in sterile water, notify the doctor. क्या कहना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में? Yes, option number C is the right answer. You are right. Option number C is the right answer.
सो नेक्स्ट देख लेते हैं. In peritoneal dialysis, cloudy dialysate fluid indicate proper ultrafiltration, peritonitis, dehydration या hyperglycemia. What is the right answer? Of course, option number B is the right answer. Very good, beta. Option number B is the right answer. Next question. Which ECG change is most characteristics of hypokalemia? Tall peak, T wave, U wave, ST elevation, prolonged PR interval. What you say about this question? Of course, option number B is the right answer. Very good, beta. Option number B is the right answer. Next question. In a patient with brain injury, decerebrate posturing indicate damage to cerebral cortex, midbrain, brainstem या pons, basal ganglia. What is the right answer? Yes, option number C is the right answer. Very good. Option number C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. A nurse prepare mannitol for a patient with raised ICP. The important precaution is store in refrigerator, warm the solution before use, filter the solution before administration, dilute with saline. क्या करेंगे हम? एज अ नर्स क्या काम है? Yes, option number C is the right answer. Filter the solution before administration. Okay. Next question. Question number 15. The first nursing action when a patient develops ventricular fibrillation is administer amiodarone, begin chest compression, give oxygen या check IV line. What you do? Yes, you are right. Option number B is the right answer. Begin chest compression. चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, द हॉलमार्क फाइंडिंग इज सीवियर हाइपोक्सीमिया नॉट करेक्टेड बाय ऑक्सीजन थेरेपी, wheezing and bronchi, hypercapnia या pulmonary hypertension. Yes, option number A is the right answer. Okay, severe hypoxemia not corrected by oxygen therapy. Next question. A patient with DKA presents with fruity breath odor. The odor is due to lactic acid, acetone, alcohol या ammonia. What you say about this question? Very good, beta. Option number B is the right answer. B is the right answer. Next question देख लेते हैं. After abdominal surgery, a patient suddenly develops wound dehiscence with bowel protrusion. The nurse should push bowel back inside, cover with sterile saline soaked dressing, apply abdominal binder या notify housekeeping. क्या करेंगे आप? Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question. Which position is best for a patient with pulmonary edema? Supine, trifolar position, tendal bird position या side lying position. Of course, you are right. Option number B is the right answer. Last question. MSN का
Which electrolyte imbalance increase the risk of digoxin toxicity? Hyponatremia, hypokalemia, hypercalcemia या hypermagnesemia? लास्ट क्वेश्चन है इसका. टेल मी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आंसर के दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स. विच इम्यूनोग्लोबिन इज, पीडियाट्रिक्स स्टार्ट करते हैं. विच इम्यूनोग्लोबिन इज ट्रांसफर्ड मैक्सिमली फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा? IgA, IgG, IgM या IgE? फटाफट बता दो. IgG. वेरी गुड बेटा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. IgG इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीड पाइप रिजिडिटी इन इन्फेंट इज अ फीचर ऑफ cerebral palsy, tetanus neonatorum, kernicterus, hydrocephalus. What do you think about this question? Answer me. Of course, beta. Very good. Option number B is the right answer. You are right. Next question. Question number 3. A 2-year-old child present with bowing of leg, rictus rosary, and widening of wrist. The diagnosis is rickets, osteogenesis imperfecta, scurvy या marasmus. What do you think and what do you say? Tell me. Yes, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. रिकेट्स में होता है ये सब साइन प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इज चेस्ट एक्सरे, इन इकोकार्डियोग्राफी, ECG या CT एंजियोग्राफी? Yes, option number B is the right answer. Echocardiography. Okay. Next question. Question number 5. The antidote for iron poisoning in children is EDTA, BAL, deferoxamine, D-penicillamine. नहीं बेटा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नॉट बी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. बी आंसर सही नहीं है, सी वाला सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया रिलेटेड डेथ इन इन्फेंट इज सेप्टिसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन या रीनल फेलियर? सिंपल क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. डिहाइड्रेशन. डायरिया होगा तो डायरिया से रिलेटेड क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिकमेंडेड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट इज डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरिलियस या वेंट्रोग्लूटियल? मोस्ट कॉमन साइट. Yes, option number C is the right answer. C is the right answer. Move on. Next question. A 6-month-old infant does not roll over his poor head control and persistent Moro reflex. This suggests autism, cerebral palsy, hydrocephalus या development delay?
Yes, option number D is a right answer. Development delay. Next question. Phototherapy for neonatal jaundice act by decreasing bilirubin production, converting bilirubin into water soluble form, increasing liver conjugation, enhancing excretion by kidney. What is the right answer? Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question. The most common cause of acute viral bronchiolitis in infant is adenovirus, influenza virus, respiratory syncytial virus या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. Yes, option number C is the right answer. C is the right answer. Next question. Question number 11. The क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देन उसको आंसर करो. कोई भी आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आप उसमें पढ़ो इजीली और आंसर करो. सारे ऑप्शन को पढ़ो क्योंकि थोड़ा एक ऑप्शन के लिए भी वो हो जाता है कि गलती हो गई. Yes, option number B is the right answer. B is the right answer. Next question. Thumb sign on X-ray is seen in epiglottitis, crop या laryngomalacia या अस्थमा. A. Yes, option number A is the right answer. Next question. Mumps is commonly associated with complication of myocarditis or orchitis, nephritis या pneumonia. What is the right answer? Yes, option number B is the right answer. Orchitis is the right answer. Next question पे चलते हैं. Question number 14. The best method to confirm diagnosis of Hirschsprung disease. Barium enema, rectal biopsy, manometry या colonoscopy. Yes, option number B is the right answer. Rectal biopsy. Next question. The triad of seizure, mental retardation, and adenoma sebaceum is seen in neurofibromatosis, tuberous sclerosis, Strauss-Weber syndrome या Rett syndrome. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो. गुंजन. हेलो गुंजन. C. Not C. Option number B is the right answer. B is the right answer. Okay. Next question. Question number 16. Which vaccine is contraindicated in an HIV infected child with severe immunosuppression? OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी या न्यूमोकोकल. कौन सा है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड में? Yes, A is the right answer.
ए इज़ द राइट आंसर। ओपीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, neonatal sepsis is most commonly caused by E. coli, group B streptococcus, listeria monocytogenes या Klebsiella? Tell me. Option number B is the right answer. Group B streptococcus. Okay. Next question. पीडिया का लास्ट 2-3 क्वेश्चन रह गया है। द अर्लीस्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव्ड बाय इन्फेंट इज सोशल स्माइल, सिटिंग, क्रॉलिंग या वॉकिंग? कौन सा माइलस्टोन है जो अर्लीस्ट वो सीख जाता है बच्चा? यस, वेरी गुड बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन प्रेजेंट विथ कैट लाइक क्राई इन इन्फेंट? क्राइड्यू चार्ट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। व्हाट इज राइट आंसर? Yes, option number A is a right answer. A is a right answer. Next question देख लेते हैं। A child present with generalized edema, massive proteinuria and hypoalbuminemia. The most probable diagnosis is nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis, chronic renal failure या पाइलेनोनेफ्राइटिस? लास्ट क्वेश्चन पीडिया का। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। सारे आंसर की दिए हुए हैं। चलो ओबीजी स्टार्ट कर लेते हैं। ओबीजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? ओबीजी का आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच या ऑक्सीटोसिन? ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरोन। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सर्विक्स, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस या स्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? यस, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकिया रूब्रा इज नॉर्मली प्रेजेंट अप टू? आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं, लोकिया रूब्रा, सिरोसा, अल्वा, जिसमें कि पूछा है लोकिया रूब्रा। और ये 3 to 4 डेज के लिए प्रेजेंट रहता है आफ्टर डिलीवरी, रेड इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस इज प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन के लिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशॉप्स स्कोर इज यूज्ड टू असेस pelvic adequacy, cervical ripening, fetal heart rate या लेबर प्रोग्रेस? क्या कहना चाहोगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ postpartum hemorrhage is trauma, uterine atony, retained placenta या coagulopathy?
What is right answer? Yes, option number B is the right answer. Uterine atony. ये मोस्ट कॉमन कॉज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The normal duration of puerperium is 2 weeks, 6 weeks, 3 month या 9 month. ये भी इजी क्वेश्चन. Yes, 6 week is the right answer. 6 week is the right answer. Next question. The best position for uterine prolapse surgery in lithotomy is dorsal seam lithotomy या Trendelenburg position. Yes, option number C is the right answer, lithotomy position. Okay. Next question, question number 9. The normal presentation of fetus at term is ब्रीच पोजीशन नॉर्मल होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है या फेस प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है. फिर से सिफेलिक प्रेजेंटेशन इज नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ fetus. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which drug is used for prevention of eclampsia? Diazepam, magnesium sulfate, nifedipine, hydralazine. Yes, magnesium sulfate जो प्रिवेंट करता है एक्लैम्सिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन. A snowstorm appearance. Yes, option number B is the right answer. A snowstorm appearance on ultrasound is diagnostic of molar pregnancy, ectopic pregnancy, missed abortion या placenta previa. Option number A is the right answer. Very good beta. Option number A is the right answer. Molar pregnancy is the right answer. Next question. The commonest site of ectopic pregnancy. जब बात की जाए कि कॉमनेस्ट साइन कौन सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की. एम्प्यूला, स्थमस, ओवेरी, एब्डोमेन. यस, वेरी गुड हरी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. एम्प्यूला कॉमनेस्ट साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के. नेक्स्ट क्वेश्चन. A fetus of 28 week have average weight of. जब एक फीटस होता है वो 28 वीक में जब पहुंच जाता है तो उसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1200 ग्राम या 2000 ग्राम. यस, 1200 ग्राम हो जाता है 20 वीक में जब प्रेगनेंसी पहुंचती है तो फीटस का वेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल इज ओवेरियन फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर या सर्वाइकल फैक्टर. व्हाट इज द राइट आंसर? Yes, option number B is the right answer. Tubal factor is the right answer. Next question. Chadwick sign जो होता है वो क्या होता है? Bluish discoloration of cervix, softening of cervix, softening of uterus या irregular uterine contraction. चैडविक साइन क्या होता है? बेटा सही. ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड चैडविक साइन. प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है. द मोस्ट
reliable sign of pregnancy. Question number 16. Amenorrhea, quickening, vital heart sound, morning sickness. साइन ऑफ प्रेगनेंसी पूछा है। वैसे आपको लगेगा कि सारे आंसर ही राइट हैं, बट यू चूज वन, फीटल हार्ट साउंड, बिकॉज होता है कि आप प्रेग्नेंट है वोमेन और कितने वीक तक साउंड ही नहीं आता है। The diameter of fetal skulls that enter in vertex presentation is suboccipitophragmatic, occipitofrontal, submentopragmatic या mentovertical. Yes, option number A is the right answer. Suboccipitophragmatic is the right answer. Next question. The drug of choice for medical termination of pregnancy up to 7 weeks. ऑक्सीटोसिन, मीज़ोप्रोस्टोल प्लस साथ में देते हैं माइफिप्रेस्टोन या इर्गोमेट्रिन या मेथोट्रेक्सेट. व्हाट इज राइट आंसर? ये तो सबको पता होगा. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Polyhydramnios is associated with renal agencies, esophageal ataxia, intrauterine growth restriction, oliguria. What is the right answer? Option number B is the right answer. B is the right answer. Next question. The most common genital malignancy in female is carcinoma cervix, carcinoma ovary, carcinoma endometrium या carcinoma vulva. लास्ट क्वेश्चन है ओबीजी का. यस, ऑप्शन नंबर A is the right answer. Carcinoma cervix. आंसर की यहाँ पर फिर फंडामेंटल करते हैं. फंडामेंटल के लास्ट 20 क्वेश्चन रह गए हैं. Who is regarded as the founder of modern nursing? फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये तो सबको पता होगा भाई. नर्सिंग तो कर रहे हो तो पता ही होगा, या फिर जो कर लिया उन्हें भी पता होगा. फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन इन चार्ट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग या इवेल्युएशन. What do you think about this question? Option number A is the right answer. Process of recording patient information in chart is known as documentation. Next question. The principle of least restrictive care in nursing ethics refers to using physical restraint when necessary, protecting patient right while ensuring safety, preventing confidentiality breaches, limiting patient mobility. What is the right answer? Yes, option number B is the right answer. Very good beta. Option number B is the right answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. The most accurate method of assessing core body temperature is oral thermometer, rectal thermometer, axillary thermometer या tympanic thermometer. Easy question. Easy question.
Yes, option number B is the right answer. Most accurate method rectal thermometer ही है, सबने पढ़ा हुआ फर्स्ट सेम में. A nurse is caring for a patient with increased intracranial pressure, ICP जिसे बोलते हैं. Which position is best? Supine with head flat, high fallers, head elevated at 30-degree angle, a Trendelenburg position. What is the right answer? Yes, option number C is the right answer. C is the right answer. Next question. In infection, question number 6 है. In infection control, the chain of infection includes all except reservoir, portal of exit, susceptible host या hospital policy. What is the right answer? Option number D is the right answer. Hospital policy is the right answer. क्योंकि एक्सेप्ट करके पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. While performing CPR on an adult, the correct compression to ventilation ratio, करेक्ट रेशियो क्या है? 30:2 is the right answer. Very good beta. 30:2 is the right answer. चलो next question. During blood transfusion, the first sign of a transfusion reaction is usually hypotension, back pain, fever and chills या hemoglobinuria. Option number C is the right answer. Fever and chills is the right answer. Next question. Which nursing intervention is priority during administration of IV potassium chloride? Administer as rapid IV push, dilute and give slowly by infusion pump, mix with dextrose solution only, give intramuscularly. Yes, option number B is the right answer. Very good beta. Option number B is the right answer. Next, which solution is used for cleaning wounds? Normal saline, 5% dextrose, distilled water या RL, ringer lactate. Yes, normal saline used to cleaning the wounds. पूर्वी घाव को साफ करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 5 rights of medication administration include all except right patient, right drug, right doctor, right time. एक इसमें नहीं है, वो कौन सा है? Yes, right doctor. Right doctor is the right answer. The correct sequence for donning PPE. Donning duffing. गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स. या फिर मास्क उतारेंगे पहले, देन गाउन, देन ग्लव्स, देन गॉगल्स. या ऑप्शन नंबर सी, गॉगल्स, मास्क, गाउन, ग्लव्स, या ग्लव्स, गाउन, मास्क या गॉगल्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. वेरी गुड बेटा. फर्स्टली गाउन रिमूव करेंगे, देन मास्क, देन गॉगल्स, देन ग्लव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of bed is prepared for a patient returning from surgery?
ये फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है। ऑक्यूपाइड बेड, क्लोज बेड, ओपन बेड या पोस्ट ऑपरेटिव बेड, और क्वेश्चन में ही आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है, जिससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड सर्जरी के बाद आएगा तो पोस्ट ऑपरेटिव ही होगा ना, तो इसे पोस्ट ऑपरेटिव बेड बोल देंगे। द टेक्निक ऑफ लिसनिंग टू बॉडी साउंड with a stethoscope is called palpation, inspection, percussion, auscultation. स्टेथोस्कोप से जब हम साउंड सुनते हैं उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? यस, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में देखते हैं, परकशन में कैलकुलेट करते हैं, परकशन करते हैं। Which is the safest site for IM injection in infant? I think ये क्वेश्चन अभी पहले भी सॉल्व किया है हमने, सो इसका आंसर सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी is the right answer. Next question, in arterial blood gas ABG analysis, metabolic acidosis is indicated by? ऑप्शन देखो, ध्यान से ऑप्शन देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, a patient in shock should be positioned in Fowler position, Tendelberg position, lithotomy position या Sims position? B is the right answer. Tendelberg position. Next question, disinfectant most commonly used for hand hygiene in hospital, Lysol, alcohol based hand rub, Savlon या फिनोल? सभी हॉस्पिटल गए हैं, सबको पता होगा अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसका हमने कोरोना टाइम में भी बहुत यूज़ किया, कोविड टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोर्स स्केल्स, बार्डन स्केल्स, ग्लासोकोमा स्केल्स या अपकार स्कोर? यस, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए द वन लर्नर सॉरी गाइस, एक ही स्केल है जो ग्लासोकोमा स्केल होता है। लास्ट क्वेश्चन, when the nurse explain a procedure to the patient and gain permission, it is known as consent, confidentiality, autonomy, advocacy. What is the right answer? ये भी बिल्कुल ईजी है। अगर हम किसी पेशेंट से कोई भी नर्स है जो एक्सप्लेन करती है प्रोसीजर पेशेंट को, उसे कंसेंट बोलते हैं। द पेशेंट एंड गेन परमिशन, जो हम परमिशन लेते हैं वो हम कंसेंट ही लेते हैं पेशेंट का। सो दैट्स फॉर टुडे लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुद पर विश्वास करो क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास करो क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। दैट्स फॉर टुडे वीडियो, टुडे लाइव। अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको अगर आपको लाइव पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी।
अगर आपका कोई सजेशंस वीडियो रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन बनाओ, दिया आप मैम, आप जो भी आप समझते हो तो आप बता सकते हो। चलो बाय बाय।